Hi everyone, welcome to my channel Mommy Tales India, and I am so excited about today's video because today's video is about Cordelia Cruise जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली 5 days बिता कर जा रहे हैं। आज हमारा क्रूज़ के ऊपर लास्ट डे है। कल हम वापस पहुँच जाएंगे मुंबई। सो आई थॉट लेट मी टेक यू फॉर अ क्रूज़ टूर एंड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैसा है अंदर से क्रूज़, कैसा दिखता है, क्या क्या एंगेजमेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या एंगेजमेंट जोन्स हैं एंड हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। Going to be one such vacation जो स्पेशली मैं और मेरी फैमिली really enjoyed and we are going to remember it for a very long time. Let me first begin cruise हमने कौन सा लिया। So we had the 5-day cruise जो कि स्टार्ट हुआ था मुंबई से स्टार्ट होके हमारा फर्स्ट एक्सकर्जन था कोची में। कोची में हम थे अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए, फिर हम वापस आए अपनी क्रूज़ के ऊपर। देन आवर सेकंड एक्सकर्जन वाज इन लक्षद्वीप विच वाज फॉर से अराउंड 6 to 7 आवर्स इन लक्षद्वीप। फिर हम अपने क्रूज़ पे वापस आए और अब ये क्रूज़ कल पहुंच जाएगी मुंबई। सो वी वर हियर फॉर 5 nights. दैट वाज आवर ट्रिप। आप देख सकते हैं आई एम ऑन deck 9, दैट इज़ द जोन ऑफ लाइब्रेरी एज वेल. So we had our room on deck 9 in the premier room category, and our room had a beautiful sea view and it was the most amazing thing क्योंकि हम सुबह उठते थे और सनराइज़ सी के बगल में होता हुआ दिखता था. It was so beautiful. I think I'm really going to miss it क्योंकि कल हम पहुंच जाएंगे मुंबई वापस. So let me tell you about the cruise. Basically यहाँ पे 11 decks हैं. सेकेंड फ्लोर पे जो शिप का सेकेंड फ्लोर है वहाँ पे हमारी एंट्री होती है. उसके बाद डेक 3, डेक 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर वेयर वी हैव एंगेजमेंट जोन्स, वी हैव रूम्स. और डेक 10 के ऊपर एक पूल है जहाँ पे सब लोग दे कैन एंजॉय द सी व्यू. बेसिकली वो शिप का टॉप फ्लोर है, दैट इज़ डेक नंबर 10. ऑल्सो हैव अ डेक 11 जहाँ पे स्टार गेजिंग कर सकते हैं. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पोडियम काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ से सी व्यू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है. सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दीज डेक्स. आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द फ्लोर्स ऑफ द क्रूज. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक यू टू द डेक नंबर 2 जहाँ से हुई थी हमारी एंट्री. सो दिस इज़ द लिफ्ट. सबसे पहले हम चलते हैं डेक 2 के ऊपर. So you can see glass lift है and it looks so amazing as I'm going down. This is the deck 2 where we do the entry. ये portion ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी because they have restricted access to this. Now we're going to This is the deck number 3. यहाँ पे rooms हैं basically. Now we are going to deck number 4. So deck 4 पे हमारे major जो engagement zones हैं. This is the Starlight restaurant which is very famous over here. फोटो गैलरी that you can see. This is the Chairman's Club. ये दोनों बाजू बाजू में हैं. So let's go inside. Chairman's Club is where we have live music, shows, and the bar. This is the photo gallery area. This is about the next cruise. Now we are going to go on the upper deck. That is our deck number 6, which opens to casino. So beautiful. This is our deck number 6. This is a very beautiful photo point. Has royal shops
which are yet to open. Few of them are open, but most of them are yet to open. The outer part of the 6th deck. ये है हमारा मार्की थिएटर का upper floor on deck number 6. Let's go to deck number 9 and see the library zone, and then I'm going to take you to the deck number 10, which is the most beautiful deck. It has pool party, kiddie play area, and we have sea view on all the side, food court, and on the deck 11 we have stargazing. Very beautiful library area. And now, my friends, let's go to the most happening part of the ship, that is deck number 10. So this is where the food court area opens up to the deck number 10, which has the pool party going on. This is the bar, which is only for the premier guests. And this is the Cordelia Academy, which is there for the kids. He has come here every day. And now I'm going to take you to the topmost deck of the ship. That is the deck 11. So let's go. This, my friends, is the way to our room. That is on deck number 9.